वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको एक्सेल के वो सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और आपको दिखाई देगी सबसे पहले रॉ की संख्या जो है 10,48,576। उसके बाद आपको कॉलम दिखाई देंगे जो है 16,384। अब इस पर जाएंगे यानी सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आप कैसे पहुंच सकते हैं और सबसे लास्ट वाली रॉ पे आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो रॉ पे पहुंचने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है डाउन एरो का बटन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप सबसे लास्ट वाली रॉ पे पहुंचेंगे और दोबारा से ऊपर पहुंचने के लिए आपको कंट्रोल के साथ आप एरो का बटन प्रेस कर आप ऊपर पहुंच जाएंगे और सबसे लास्ट वाले कॉलम पर जाने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में राइट एरो। तो आप देखेंगे यहां पर जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है उसका नाम भी आप पता कर लीजिए, ये है XFD। और सबसे पहले कॉलम पर पहुंचने के लिए आपको वही कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो को प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में चारों तरफ घूम सकते हैं। और अब हम बात करते हैं एक्सेल के कुछ बेहतरीन फॉर्मूलेज की। तो आप यहां पर देखें नीचे 3 शीट्स दी हैं, आपने और भी शीट्स बनाई होंगी और आपको कीबोर्ड की सहायता से अपनी शीट्स को स्विच करना है। यानी एक शीट से दूसरी शीट पर जाना है। अगर आप पहली शीट पर हैं और आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ में पेज डाउन बटन। तो आप देखेंगे आप लेफ्ट से राइट की ओर चलना शुरू करेंगे और अगर आप आखिरी शीट पर हैं और आपको पहली शीट पर जाना है तो कंट्रोल के साथ में पेज बटन को प्रेस कीजिए तो आप पहली शीट पर आ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर किसी भी सेल पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेल पर क्लिक करते ही एक कॉलम और एक रो सेलेक्ट होती है। तो अगर आप सेलेक्टेड रो को हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 9 बटन को प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे वो जो रो है वो हाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 0 बटन को प्रेस कीजिए तो जो कॉलम है जो सेलेक्टेड कॉलम है वो हाइड हो जाएगा। एक से ज्यादा करने के लिए आप एक साथ उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ तरीके से मैंने ये बी से लेकर डी तक के कॉलम को सेलेक्ट कर लिए हैं और कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करने पर ये एक साथ में हाइड हो जाते हैं। अब इनको हाइड कैसे करते हैं? तो रो को हाइड करने के लिए आपको ये सेलेक्ट करना होगा जिसके बीच में रो हाइड है, कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में 9 बटन दोबारा से जो आपकी हाइड हुई थी वो अनहाइड हो जाएगी। अब क्योंकि एक्सेल 2007 में कॉलम को हाइड करने का शॉर्टकट नहीं है तो इसलिए आपको मैनुअली करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करके यहां से अनहाइड करना होगा। और देखेंगे एक्सेल के सेल्स में कुछ डेटा फिल कर रखा है। इस डेटा के चारों तरफ अगर मैं बॉर्डर लगाना है तो हमें क्या करना होगा? सिंपल आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एंड बटन को प्रेस कीजिए। तो यहां पे आप देखेंगे इस डेटा के चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। इस बॉर्डर को आपको हटाना है तो आपको क्या करना होगा? सिंपल से सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अंडरस्कोर बटन को प्रेस कीजिए। तो आप देखेंगे ये जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि करेंसी में कन्वर्ट हो जाए साथ में दशमलव के 2 स्थान तक 0 भी आ जाए तो बस आप इसको सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट कंट्रोल के साथ डॉलर बटन को प्रेस कीजिए। तो आप देखेंगे जो आपके नंबर्स हैं वो करेंसी में कन्वर्ट हो गए हैं, साथ में दशमलव के बाद 2 0 भी आ गए हैं। अब बात करते हैं किसी भी सेल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में जो प्रतिशत का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे इस सेल की फॉर्मेट है वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो कुछ भी नंबर लिखेंगे वो अपने आप परसेंटेज में आएगा जो कि पहले नहीं आ रहा था। तो शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैं एक फैक्टर आपको बताता हूं। एक्सेल के किसी भी सेल में जो भी नंबर लिखा होता है अगर उस सेल को आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो तो हमारा डेट आ जाती है और वो जो डेट होती है वो कैंडिडेट करती है। मैं आपको समझाने वाला हूं। हमारे कंप्यूटर जो कैलेंडर होता है वो सन 1900 से स्टार्ट होता है। एक्सेल का भी इसी तरीके से होता है। तो अगर किसी सेल में एक टाइप करके उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो डेट आएगी वो आएगी 1 जनवरी सन 1900। मैं आपको करके दिखा देता हूं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्रेस करना है सिर्फ बटन को। तो आप यहां पर देखेंगे कि 1 जनवरी सन 1900 जो डेट है वो आ रही है। यानी ये जो नंबर है वो इंडिकेट करता है आपके दिनों को जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। यानी यहां पर हम 30 शिफ्ट प्लस कंट्रोल की प्लस हैश कॉमन एक साथ देने के बाद 45,137 इंटर करने से और आज का डेट आएगा। Excel. So the first one that we're going to go over is the average function. So let's say we have a group of numbers 15, 27, 42, 93, 56, 84, 75, 33, and 49. If you want to find the average of these numbers, type in equal, average, parentheses, and then highlight the column of data that you want to average. And so the average of these numbers is 53.12. So if we wish to find the sum of the numbers in this list, we can type in equal, sum, parentheses, and then highlight the column that you want to find the sum of. Now, the third function is going to be the sum if function. So let's compare that with the sum function. The sum function allows us to calculate the sum of a range of values. Let's say if we want to find basically the sum of all of these vehicles, we can just use the sum formula. But let's say if we want to use the sum if formula, how will that help us? Let's highlight this particular cell. So I'm going to give it a yellow color. So let's say if we want to find the sum of only the Mazda vehicles. So we don't want to find the sum of all these numbers, but just basically a selected sum. We want to find the sum of a certain element in this list. So what we need to do is type in equal, sum if, parentheses, and then we need to select a range. So the range will be the card type, and then comma, the criteria will be based on whatever is in this cell, cell B14. And then comma, the sum range. So these are the numbers that we wish to add. Close parentheses, enter. This should be the card type actually, instead of Mazda. Now we're going to put the word Mazda in this cell. And so notice that we get the total sum of all the Mazda vehicles. So that's 125 plus 142 plus the count function. So how can we use the count function? The count function allows us to count. If you read it, it says it counts the number of cells in a range that contains numbers. So we can use it to count this column. And so we have a total of 2 numbers. The next one is the count tough function or count a function. And so this function allows you to basically count the number of cells that are not empty. So like these cells, with the count if function. So the count if function is very similar to the sum if function. It allows us to count a selection in this entire column. So let's change this to count if. And so this is going to be equal, count if, and then we need to select the range. So this will be the range. And then the criteria, which is a cell, will be whatever is in a cell B14. So notice that it tells me how many times Toyota is listed in this list. And so we have 1, 2, 3. Now let's choose Mazda. Let's choose something different. Let's choose Honda. Honda should be listed once. Now I'm going to add another Mazda to the list, which is number 7, concatenate Johnson. Now let's use the concatenate function. So I'm going to type in equal, concatenate, and then parentheses, text 1, and then comma, text 2, close parentheses. And so notice that it puts the information in column or in cell B2, and it connects it with information in cell C2. And if I want to, I can extend this information. Now, instead of doing Martin, Tolu, I want to use concatenate function. Then you input the first value, followed with a comma, and adding a string to the comma. Then clicking on the next point, then you hit your enter button. So these are the 2 points separated by commas. So you drag down this value to the end of the points right here. Right click, then copy, then come to AutoCAD. Right here at the command bar, paste the to this value, click on OK. Now these are the points that we got from the if function. So equal if. So the logical test will be based on cell B3. So if B3 is, let's say, in orange, I want Excel to tell me that it's true. If it's not orange, I want it to tell me that it's false. So here it is false because it's not orange. And I'm going to extend it. Notice that I do get a true statement for this being orange. If I change this to orange, it becomes true. If I change that to an apple, it becomes false. And so that's one way in which you could use the if statement. You can also use it to say something other than true and false. So let's say if cell B3 is a lemon. So for words, you need to put in quotation marks, comma. Now instead of typing true, I'm going to type in yes. So I have to put quotations yes. And the next one I can type in no, or I can say it is not a lemon. Whatever
I decide to write here, it's going to replace the word false with that statement if it's not true. So here I don't have a lemon, so it is not a lemon. And now I can extend this.